Mamta. Hello, a very, very good evening to all of you. I can see people already joining in. Suhavna, Sonu, Amit, Sardar, Inklabi Sardar, Mamta. Hi, hi. Uh, Abhinav Chaudhary. Hello, Abhinav. Pooja, Kavita. Hi, Pooja. Hi, Kavita. Yes, yes, Amit, you're absolutely right. Kavita, I'm great. Kavita, I'm great. Thank you, thank you. I hope you two are doing well. Yes, Amit, you're absolutely right. Today is the sixth death anniversary of the former president, the missile man of the country, the great scientist, Dr. APJ Abdul Kalam. Good evening, Meenakshi. Hi, Anshu. Amritman. Amrit, hello. Hello, Amrit. Hi, Bhani. राजकुमार हाय राजकुमार अच्छा एक छोटा सा करेक्शन मैं करती हूँ आप लोग सारे लोग आते हैं एंड इट इज सो नाइस टू मीट यू ऑल इन द इवनिंग टाइम सबसे मिलना बहुत अच्छा लगता है अंजलि रमना मीनाक्षी विकास एक छोटा सा करेक्शन लेट अस स्टार्ट विद अ स्मॉल करेक्शन टुडे you all come and say me good evening ma'am and I feel absolutely mm, privileged to greet you all and to receive your greeting. But the small correction that I want to make is in the spelling of man. It is M-A apostrophe A-M. Right. Dr. Rachna Sharma, thank you so much, Dr. Sharma, for joining in. Satyapal, hi. Anita, hi. HMH, ये क्या है? What does that mean, Kavita? Hello, ma'am. Yes, Himanshu Yadav. Right. So I'm getting a lot of spellings of ma'am. So I thought let me start from there today because today again we will be dealing with written communication. तो वो थोड़ा सा जैसे कि अब बहुत सारे स्पेलिंग्स आ रहा है कोई लिख रहा है MAM कोई लिख रहा है MEM कोई लिख रहा है MAIM but the correct spelling is M-A apostrophe A-M, man, because it is right, absolutely, Amit. So it is a short form of madam, from madam to man. Right, with that, I welcome you all again in this session of Spoken English Personality Development and Communication Skills Development session with me, Parmita Dhar. I'm from Kolkata, live streaming on the Facebook page of SKD University. Today is perhaps the 11th session we are having. And oh, Hibanshu, that's very fast. That's what is very, very inspiring when you pick up things. Hi, Eliza. Hello, Gauri Shankar. When you pick up things, right? Suhavna. Hello, Suhavna. Good evening, my dear. Good evening. Yeah, Dr. Rachna Sharma, you are being there constantly in the session. Thank you for that. Rajkumar, thank you, Rajkumar, for coming and joining in. Purav, how are you? Parav, how are you? Pooja, hi. So let us start. Hello. Yes. Now I'm getting the right writing. I'm so happy. You people are so intelligent. In fraction of seconds, you people are picking up things, and that's absolutely amazing, stunning. I must say. Okay, so hi Dolly, hi Himanshi, hi Parav. Okay, now, the topic which I wanted to discuss today is, of course, a kind of continuation from what we discussed yesterday. That is writing skills, and today I'm going to talk about. I mean, कैसे हो मैम? मैं बढ़िया हूँ. आप कैसे हो? और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जब हम लोग लिखने बैठते, when we start to write, what are the things which restricts us from writing well? So I thought I give the name of my presentation, How to Write Well.
राइट? तो टू राइट वेल हम लोगों ने कल बहुत सारा कुछ डिस्कस किया था कि हमें क्या करना चाहिए। ऑडियंस के बारे में सोचना चाहिए, छोटे सेंटेंसेस में लिखना चाहिए, क्लैरिटी रखनी चाहिए, उसके बाद स्पेलिंग एरर्स देखने चाहिए, लैंग्वेज देखना चाहिए। तो उसी को आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये होगा, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर देर इज नो राइटिंग? Writing, hi Rinku. Writing is a very primitive thing. आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा स्कूल में एटलीस्ट, इफ नॉट इन द कॉलेज, इफ यू हैव नॉट हैड हिस्ट्री इन योर कॉलेज, not everybody has, because in college we get the opportunity to choose our subjects or lines. We have seen that writing is very old in the civilization. Even in Mesopotamian civilization, we had writing. We have seen writing. Indus Valley civilization. We have seen signals uh, encrypted on stones, walls of caves, so that people can read them, understand from them. So writing is as basic, as old and as basic as that. Isn't it? Isn't it? And then they had good vibes, good vibes. Because Joshi, good vibes is very important, positive and good vibes, right? We have seen tablets, stone tablets, right, where those things were used to be written on the walls of the caves, on stone tablets. These were written, and what was the reason for those writing? The reason for those writing was to keep a record, so that the next generation, the next to next generation, and generations to come, they can अंडरस्टैंड, उनको पता चले। हिस्ट्री हम लोग को कहाँ से पता चलता है? वही इंस्क्रिप्शन से, वही राइटिंग से, है ना? तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? थिंक ऑफ अ डे वेयर यू डू नॉट रीड एनीथिंग। कुछ राइटिंग स्टाफ से आप कुछ पढ़ नहीं रहे हो, ऐसा अगर दिन हो तो आपको कैसे लगेगा? आपको कैसे लगेगा? So, my topic today is how to write well. असल में writing is a fundamental thing that we need to communicate, right? अब जो मैंने ये टॉपिक दिया है आप लोगों के कि हाउ टू राइट वेल, कैसे ठीक से हम लोग लिख पाए, बहुत कुछ। आई कुड हैव गिवन यू अ टॉपिक, राइट एन एसे ऑन अ रेनी डे, or write an essay on your native place, write an essay on your childhood, on your school. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, right? First of all, we have to jot down one idea at a time. We have to jot down one idea at a time, which is known as ideation. हाँ, exactly. Writing is very important. I agree with you. अच्छा, आपका जो नाम क्या था? अरे आप लोग ना अपने नाम से ये प्रोफाइल क्रिएट किया करो प्लीज, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ओके, एनीवेज, सो आइडिएशन, व्हाट इज आइडिएशन? कोई भी आइडिया को डेवलप करना, इसको हम लोग आइडिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू माई स्टूडेंट्स। आई टेल देम टू स्पीक और टू राइट, to speak or to write on a topic called A Day Without My Mobile Phone. A Day Without My Mobile Phone. चलो इसी पे आइडिएशन करते हैं आज, राइट? एक दिन के बारे में लिखो या बताओ जिस दिन आपका मोबाइल फोन आपके पास या आपके साथ न हो। ऐसा कोई दिन है क्या? Can you imagine such a day? So how are you going to spend that day? That requires ideation. उसके लिए ideation चाहिए. Always sit down when you sit to listen to something or to write something. Always sit with a notebook. Always sit with a notebook. जो भी दिमाग में आए, 10 पॉइंट अगर आप लिखोगे ना, उसमें से 7 points you will eliminate end of the day. You will eliminate
But what happens? But what will happen after that? You will be left with 3 points, और उन 3 पॉइंट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं. तो जो पीपीटी मैंने शेयर किया था उस पे आप देखिए एक चीज, फिर से इसको शेयर करती हूँ. बीच बीच में मैं शेयरिंग को बंद करती हूँ सो दैट आई कैन सी यू एंड अंडरस्टैंड, राइट. यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट, इफ यू सी आई हैव रिटन 3 R's: रीड, रिसर्च, रिकॉल. रीड, रिसर्च, रिकॉल. और ये जो 3 R's है ना, ये सिर्फ रिटन कम्युनिकेशन के लिए नहीं, एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है. Whether it is a written communication, whether it is an oral communication, whether it is a non-verbal communication, पढ़ना is very important. The more we read, the more we know, the more we do the research. अब रिसर्च करने हम लोग कैसे जाए? मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो नहीं घूम सकते ना सारे तरफ कि I will do a research. So research, one type of research is of course reading. जो लोग PhD रिसर्च करते हैं, they read, they find out in various books, articles, magazines, journals, what is being written on a particular topic on which they are doing their PhD. तो आपको एक टॉपिक दिया गया है कि a day without your mobile phone. What is the first research idea you will have? What is the first point of research you will try to find out, you will try to have? रीड, रिसर्च, रिकॉल. रीड, READ, रीड. अच्छा, राजकुमार मौर्य आपने क्या लिखा? हाय प्रिंसिका, माई मोबाइल फोन इज अ पार्ट ऑफ थिंकिंग इन प्रेजेंट एटमोसफियर बिकॉज आई used to my watch in hand, but anybody ask me what's time, I use mobile phone for time. Without phone I have not I do not feel complete. Okay, absolutely, I understand there are a lot of language errors in the writing, but the concept idea is very good. Thank you Rajkumar. और इतने जल्दी आपने इतना सारा लिख दिया है, that is also very good. Hi Devilal, hi Kanta. So the first thing, if I would have been in your place, मैं जो ढूंढने की कोशिश करती, आप लोग क्या रिसर्च करोगे इस पे एक बार आप बताओ, एक बार ये आप बता दो मेरे को. गुड इवनिंग राहुल गुप्ता जी. The first thing I would try to do the research that in a particular age group, say 16 to 36, ये जो 20 years का गैप मैंने लिया है, रेंज मैंने लिया है, उस पे on an average Indian youths, how much time do they spend with the mobile? If I get this particular statistic, this particular data, it would be much easier for me to make something presentable, to write something on it. So मान लो दिन में on an average 5 hours, हरपिंदर हाई, 5 hours लोग मोबाइल देखते हैं. 5 working hours, 5 hours of our day, 24 hours में 5 hours निकल गया, तो we are left with 19 hours, isn't it? तो उस पे हम लोगों का एनर्जी, हम लोगों का टाइम, Amit, more than 10 hours. Yeah, nowadays too, even I use so many. I mean, I think I use 24 hours because everything is in the mobile phone. My books are in my mobile phone. My entertainment is in the mobile phone. My connection is in the mobile phone. I talk to my family members or friends or colleagues using my mobile phone or in WhatsApp video call. I take classes on Google Meet. Sometimes if I'm not using the laptop, then I use the mobile phone. That's fine. So in such a situation, can you imagine a day without mobile phone? So उसके लिए क्या होता है, डॉक्टर अहमद पुनिया, हेलो साहब, उसके लिए क्या होता है, एक दिन अगर हमारे पास मोबाइल नहीं हो तो हम लोग कैसे सफर करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो हैपन दैट वी वुड एंजॉय दैट डे.
we will have a lot of time for ourselves, which we generally have now, do not have now, because we are actually wasting that time fidgeting with the mobile, playing with the mobile, absorbed in the mobile. And I agree with whosoever wrote कि अगर घड़ी भी पहने हुए हो, वी आर यूजिंग अ वॉच, लेकिन कोई टाइम पूछता है तो हम लोग मोबाइल में ही देखते हैं, राइट? तो ये ऐसा एक सिचुएशन जब है, तब मोबाइल फोन के बिना एक दिन, अब ये जब हम लोग लिखेंगे तो हमें क्या 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 ध्यान में रखना होगा, वो सारा पॉइंट्स एक जगह पे हम लोग जॉट डाउन करते हैं, राइट? जब पॉइंट्स जॉट डाउन करेंगे, व्हेन वी जॉट डाउन द पॉइंट्स, तब बहुत कुछ होगा। कभी कभी ना इंग्लिश में लिखना होगा, लेकिन वी जॉट डाउन द पॉइंट इन आवर मदर लैंग्वेज, वेदर इट इज हिंदी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो पंजाबी का कोई लैंग्वेज हो, पंजाब का कोई लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, हरियाणवी का कोई लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, राइट? तो वो बात है जो कि इंपॉर्टेंट है। सो जॉटिंग डाउन द पॉइंट्स, राइट, इट इज कॉल्ड आइडिएशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रेजेंटेशन स्किल्स कराएंगे ना क्लास में, तब भी मैं बोलूंगी हाउ इंपॉर्टेंट आइडिएशन इज। राइट अ लिटिल बिट एवरी डे। एक दिन सुबह उठ के नहा धो के धूप जला के अगरबत्ती जला के वी कैन नॉट स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग इज अ हैबिट, writing is a passion, writing is a hobby. Somebody who likes to write will write every day, and somebody who doesn't like to write but has to write because of some reason or the other also should write every day. Make notes, you know, जब लोग बोल रहे हैं उसका छोटा छोटा नोट्स लो, brainstorm. Now what do we mean by brainstorming? ढूंढ ढूंढ के निकालो कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। आप लोग अगर मुझे एक टॉपिक देंगे तो उसको लेके आई कैन डू एन आइडिएशन। कैन एनीबडी गिव मी अ टॉपिक जिसपे हम लोग आइडिएशन, रीड, रिसर्च, जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, ये सब डाल के देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग राइटिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करें। चलिए, आई एम वेटिंग फॉर अ टॉपिक फ्रॉम यू ऑल। एंड माइंड इट, हर टॉपिक जो आपको लिखने के लिए मिलेगा या मिल सकता है, नीड नॉट बी दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट, बट यू शुड नो कहाँ से जुगाड़ किया जाए, कहाँ से यू कैन एक्चुअली गेट द कंटेंट फॉर दैट, राइट? और कैसे, नॉट ओनली कहाँ से, कैसे, एवरीथिंग इज इन द सराउंडिंग अस, राइट? Ongoing Olympics. So he wants to, Sanjay Vishu, thank you so much. It's a very, very interesting and important topic you have given. Bureaucracy versus democracy. अच्छा, Olympics पे करते हैं ना, ये bureaucracy democracy बहुत वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा controversial हो जाएगा. Let us not get into that. Yeah, in an 1 hour class ज़्यादा debate करके कोई फायदा नहीं. Olympics. तो Olympics में so far how many medals India has got? In 2021 Tokyo Olympics, one. So far one. We are hoping that we will get some more. Now, the medal has been won by whom? By a weightlifter from Manipur. Do you know his name, her name? आपको पता है उनका नाम क्या है? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, नाम क्या है? That is your research. You have to do the research. Mirabai Chanu, very good, very good. She's from a place called, a state in the northeastern part of our country called Manipur, right? Called Manipur. ये हो ही सकता है से, आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोज डिबेट्स की नॉर्थ ईस्ट कितना लोगों को पता है, मेन स्ट्रीम, आई मीन फ्रॉम हाउ नॉर्थ ईस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हो ही सकता है कि हमें नहीं पता,
but we should have the right intention to do the research and find it, राइट। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स पे और क्या कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में हम लोग अभी इसके बारे में और आगे क्या कर सकते हैं कि हु आर द फ्यूचर कॉन्टेस्टेंट फ्रॉम इंडिया। कल फेंसिंग में एक जन को वापस आना पड़ा, आप लोगों ने देखा। Of course, you can suggest a lot many better ideation, right? Right? Of course, you can do that, right? So fencing में उस पे हम लोग बोल सकते हैं, बट सबसे पहले जो हम लोग बोल सकते हैं वो है about the history of the Olympic Games, which started in Athens in Greece, isn't it? Right? और कब ओलंपिक गेम्स नहीं हुआ? ट्वाइस इन द हिस्ट्री, वन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के पता चला है। एंड you have to be able to find it out from the available resource. There is no dearth of resource in our in this virtual world. There is no dearth of resource in this virtual world. So आपको ये ढूंढना होगा। कैसे ढूंढना होगा? I will come to that. और ये सारे पॉइंट्स, ओके, बिफोर आई गो इनटू दैट, और ये सारे पॉइंट्स यू हैव टू पुट इट इन अ नोटबुक। अच्छा, अमित ने एक टॉपिक दिया है, साइंस एजुकेशन इन स्कूल एजुकेशन। आई एम नॉट वेरी clear about the topic, what he wants to say, but I'll come to you, Amit, don't worry. Right, I'll come to your topic. So historical event. So we can write about the history of Olympics, when and how did it started. We can write about the symbol, those rings. Each ring is of a different color, and each color has a significance. We can write about India's performance in Olympics, say over the last 10 Olympics. We can talk about how these people who are now participating from India, in Tokyo Olympics 2021, उनको क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। जब वो लोग मेडल लेके आते हैं तब बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक क्रिकेट। our country is only interested about cricket, right? So क्या हो सकता है if the government gives them a bit more support than what they are doing? ठीक है? yes राजकुमार मौर्य, वेरी गुड। तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, राइट? एक जगह पे जॉट डाउन कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं आइडिएशन। जैसे ये अमित ने अभी लिखा है कि साइंस एजुकेशन, I just change the topic a little bit, or I say the methodology of teaching science in school education system. We are taught science in a very theoretical manner. There is no application, barring a few experiments of biology and chemistry, right? But science could have been taught about in a more applied manner. Of course, we can teach about teaching methodology of English for school education. I mean, that is my subject. If I start talking on that, we will keep on talking. So we will do it. There are a lot of time we have, Amit, so don't worry. एक ही दिन में सारा कुछ टॉपिक तो हम लोग नहीं कर सकते ना, तो आप टॉपिक्स को बचा के रखिए। हम आते हैं, कोई भी टॉपिक आप सुन लो ना, तुरंत एक आइडिया दिमाग में आ जाता है, तो उसको नोट डाउन करो। मे बी दैट आइडिया वुड बी हेल्पफुल टू यू, मे बी नॉट हेल्पफुल टू यू,
Okay, so all these things are ideation or jotting down of points. Again, let me share. उसके बाद क्या है, मेक नोट्स, ब्रेनस्टॉर्म, दिमाग में मतलब बातें करो लोगों से, बिकॉज यू नो व्हेन यू थिंक ऑन ओनली ऑन योर ओन you get to know about things that you know, but when you talk to different people, different candidates, right, you actually talk about you actually come to know about a lot many other people, their idea, and you put them together, right? Practice choosing the right word. I'll come to that otherwise, I mean, after I finish with the other top points in this particular page. Outline your main points, edit as many times as required, and read from the audience's point of view. Always मैं किसके लिए लिख रही हूँ, मैं किसके लिए लिख रही हूँ? Am I writing it for people who are school goers? Am I writing it for people who are school goers? Am I writing it for buffering? Harpinder, what do you mean by buffering? I mean the network. Do you mean the network? मेरे यहाँ पे तो ठीक ही दिखा रहा है. Am I visible and audible to all of you? Give me a quick response. Monica, Amit, जो भी हो आप लोग, कविता, हरपिंदर, okay, हरपिंदर, right. No, my end, it's absolutely, it is absolutely fine. There's no problem from my end. Okay. Okay, great. So this is one thing which is which I was saying, that whenever we are writing for, we must know for whom we are writing. Keeping that in mind, our choice of words will be taken care of. Okay. Again, let me share. Now, this is an exercise for you. This is an exercise for you. आप लोग ये 3 चीजें बहुत अच्छे से देख लो. First is वो first वाला छोड़ दो. 5 W's, 1 H, leave it. Childhood, dream, and then there is a picture. Right? I just make it a little bigger. Now, what is this 5 W's and 1 H all about? What is this 5 W's and 1 H all about? 5 W's means who, what, when, where, why. Let me repeat. Who, what, when, why, where. And 1 H means how. Any topic which is given to us for writing or for speaking, if we can put the topic in this 5 W's and 1 H, we have something to write or to speak about. अगर हम लोग कोई भी टॉपिक को इस 5 W's और 1 H के फॉर्मूला में डाले, तो हमारे पास कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा जिसके बारे में हम लिख सकते हैं. We will have no dearth of content then. We will have no dearth of content then. ठीक है. हाँ, 5 W's 1 H. Now वहां पे 2 टॉपिक मैंने दिया था. एक था क्या? एक था माई चाइल्डहुड और एक था ड्रीम. अभी आप लोग put the 5 W's and 1 H in this topic which I have given you. First of all, when a topic is given to us, जब भी कोई टॉपिक हम लोगों को दिया जाता है, there is something which comes immediately to our mind. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं top of the mind recall. क्या बोलते हैं? Top of the mind recall. जो
आइडिया, जो टॉपिक एकदम तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए, राइट, जो जो अ, तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल. नाउ टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल के बाद हमें 5 Ws 1 8. सो व्हेन आई से चाइल्डहुड, what, not whose, what, who and whose are almost same. So Amit, it's who, when, whom, where, what, and how. Okay. So, so when I say childhood, tell me one thing which comes immediately to your mind. You can write it. So if you ask me, when I say when I get the term childhood, the first thing that comes to me in my mind is a tension-free life, a carefree life. Now, I would like to know from you all the first thing that comes to your mind when you heard or when you come across the term which I have given in this presentation, that is childhood. Hurry up. 1 2 3 4. फर्स्ट जो आपके दिमाग में आता है, मेरे दिमाग में सबसे पहले जो आता है वो है टेंशन फ्री माइंड, टेंशन फ्री लाइफ, राइट, टेंशन फ्री लाइफ. आपके दिमाग में क्या आता है? एक एक वर्ड आप लोग लिखो, राइट वन वर्ड. I'm just trying to make it more application based so that you can know from one word how can we move to the other one and then the next one, and in the process we can make a sentence and a paragraph out of it. तो childhood मतलब बचपन, बचपन या childhood जो भी हो, वो वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? चलिए जल्दी जल्दी मुझे लिख के बताइए. Hurry up. I said, if you ask me, the first thing that comes to my mind is a carefree life. No social responsibility. That is what Amit is saying. Great, great. Now, Amit, it is time for you to think of the second term, to think of the second point. First point you have written, and you know there is nothing right and nothing wrong. आपका बचपन है, आपका सोच है. Every time playing and enjoying, absolutely. No, ma'am, you are visible. Okay, thank you, Prinsika, for this. Right, every time, no study burden, no study burden, absolutely. Those are the days. Those were the days. Not they aren't anymore. So those were the days. Okay, great, great. See, let's see. There's so many people. I have only got 4 to 5. सारे लोग बताइए कि the first thing that comes to your mind when it is about your childhood, right? और जिन लोगों ने first बता दिया वो second के बारे में सोचिए. I also, whenever it is a childhood thing, another thing which comes to my mind is my school. शायद आप लोगों का भी वही है. The school where I used to go, because the school has a very important and prominent impact on a child's mind. Those were the days. Absolutely, Dolly Yadav. Right. Full enjoy. नहीं, पढ़ाई भी करना पड़ता था ना. You had to study and write exam and all. What else? Could be picnic, could be siblings, could be grandparents, right? Summer vacations. Now, what is the next thing? अभी ये सारे points हमारे पास है. What are these? These are not complete points. These are certain words. These are certain areas. Gone are those days. Oh, yeah. Hey, but it's okay. You can enjoy it. I mean, you should enjoy whatever age you are. Right? Because this is the age which will be gone with too soon. Love and care from all. Absolutely. Right? ये हो गया top of the mind recall. Now we have to put it in a proper paragraph. तो वहां पे school friends, absolutely, miss my childhood friends, right? अभी इसको now we have to put it in a sentence, an introductory sentence. कोई भी writing starts with an introduction. क्यों? Because that sets the mood of the reader.
जैसे कि अगर आप एक कहानी बोलोगे तो कहानी का एक इंट्रोडक्शन होता है, राइट? वेटिंग फॉर हॉलीडेज एंड वीकेंड्स, राइट, एब्सोल्युटली। तो कहानी का एक इंट्रोडक्शन होता है। राइटिंग में भी, चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आप एक ऑफिशियल ईमेल लिखो, चाहे आप एक रिपोर्ट लिखो, 2-3 lines of introduction is important. Now, when it comes to introduction, you go back to the formula which I gave you, 5 Ws and 1 H. So, what could be the introduction of your childhood? How would you like to introduce your childhood to people whom you know, or perhaps to people whom you do not know? ये सोचने की बात है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। I will read you a 3-line ghost story today. A 3 lines ghost story today, which I have had in my mobile. So let me use my mobile for a while. I kept it for you. Because where did it go? I kept it for you because I thought I'll be sharing that with you, that writings can be so important. Writing can be so interesting, important. No stress, worry, or care about the world. Absolutely. Now, this is a story written by a very famous writer who lives in Missouri. His name is Ruskin Bond. आपने सुना होगा रस्किन बॉन्ड का नाम, पढ़ा भी होगा। आई एम अ बिग टाइम फैन ऑफ दिस मैन, और मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, अभी भी पढ़ती हूँ, बिकॉज हिज स्टोरीज आर एब्सोल्यूट जेम्स। और ये देखिए, ये स्टोरी, इफ यू कैन सी, आई डू नॉट नो, यू कैन नॉट सी दिस, इट्स लाइक 3 lines. Please listen to it carefully and understand how impactful writing can be. It's a conversation, right, between a parent and a child, right? Do you believe in ghosts? Not between the parent and the child, between two people. Do you believe in ghosts? Asked the passenger on platform number 3. I am a rational man, said I. I believe in what I see. I am a rational man, said I. I believe in what I see. Your hands, your feet, your beard. Your hands, your feet, your beard. Then look again, he said, and promptly disappeared. Did you understand? हाँ, मैं फिर से एक बार पढ़ती हूँ। बहुत छोटा सा स्टोरी है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इट्स अ गोस्ट स्टोरी, राइट? Do you believe in ghosts? Asked the passenger. I'm a rational man, said I. I believe in what I can see. Your hands, your feet, your beard. Then look again, said he, and promptly disappeared. So this is perhaps the shortest ghost story I have ever read. I read it yesterday, and I thought I will actually keep this with me for you all, because राइटिंग का जो इम्पैक्ट है वो समझने के लिए ये स्टोरी मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा. I really thought it is a very important thing. Congrats SKD for arranging such educative programs. Sherlock Holmes, yes, I am also a big time fan of Sherlock Holmes. I'm always a fan of detective stories, thrillers, ghost stories. मुझे बहुत अच्छा लगता है, डर भी लगता है और अच्छा भी लगता है, right? So that is the impact of writing.
समझ में आया? हाँ, तो ऐसे करके आई मीन 5W1H, अगेन गोइंग बैक टू वेयर आई वाज, 5W1H, वहां पे अगर हम लोग जो भी टॉपिक हमें दिया गया हो उस फॉर्मूला में फेंकते हैं. इफ यू कैन राइट अबाउट इट विदाउट द फॉर्मूला, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो सकता है लेकिन लिखना होगा, तो हमें वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो चाइल्डहुड ड्रीम, another way of learning language, learning to write, learning to speak is picture reading. पिक्चर रीडिंग, आप देखिए, मैं फिर से शेयर करती हूँ. हाँ, you see the picture. I make it a bit bigger for you, right? And if you are asked to describe this, how are you going to do it? How are you going to do it? So when you do this, what happens? You come across new words, you do brainstorming to find new words for yourself, so that you can explain this particular picture or any picture which is in front of you properly to your audience, either by writing or by narrating, right? So that is very very important, that is a very important thing in language learning. सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ट्रिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ट्रिक्स तो उतना मुझे आता नहीं है, लेकिन मुझे जो आता है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज आई हैव नेवर बिलीव्ड इन ट्रिक्स, यू नो. I have believed in learning it in the very traditional manner, and because I believe that learning stays with us forever, so this is one way of learning. तो इसको आप कैसे explain करेंगे, आप लोग सोचिए. By the time I go to my next slide, which says that you take care of grammar, you take care of sentence construction, design, how you design your sentence, language, content, and jargons. Now all this you understand. I think jargon is a jargon for you. Jargon is means technical words. Jargon का मतलब है technical words, right? जो कि हम लोग यूज करते हैं कभी कभी, जैसे कि जब यू नो आई एम ऑल्सो ब्रॉडकास्टिंग ट्रेनर, मतलब मैं रेडियो पे कैसे बोलते हैं वो सब ट्रेन करती हूँ, हाउ टू स्पीक ऑन द रेडियो. सो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा जार्गन्स यूज करते हैं, जैसे कि स्पॉट एक जार्गन है जिसको बोलते हैं स्पॉट. नाउ इफ आई एम यूजिंग स्पॉट फॉर यू, यू विल नॉट अंडरस्टैंड. आपको लगेगा स्पॉट मीन्स किसी जगह के बारे में मैं बोल रही हूँ. तो अगर आप जार्गन्स यूज कर रहे हैं तो उसका मीनिंग भी बताना जरूरी है, राइट? अभी हम लोग थोड़ा सा वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेयर आर द एरियाज जहां पे हम लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम होता है. क्या आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को राइटिंग में कहाँ प्रॉब्लम होता है? डोंट टेल मी लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज बहुत बड़ा एक एरिया है. लैंग्वेज इज अ ह्यूज एरिया. लैंग्वेज की किस जगह पे प्रॉब्लम होता है? क्या आप लोग मुझे बोल सकते हैं? जब आप लोगों को कुछ इंग्लिश में लिखने दिया जाता है तो कहाँ पे प्रॉब्लम होता है? Anyone? I think things about which we do not know, of course. Suppose you are given to write about something that you know. You are given to write about yourself. You know, जब हम लोग इंटरव्यू स्किल्स करेंगे तो हम लोगों को द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि खुद के बारे में भी जब हम लोग बोलने जाते हैं या लिखने जाते हैं तो बहुत कुछ लगता है कि क्या लिखे, क्या बोले, क्या बताए, राइट?
Yes, what is Amit writing? Amit is saying that we cannot find the appropriate word. Absolutely, Amit. Absolutely. एग्जैक्ट वर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक दिया था, एक वो दिया था कि प्रैक्टिस चूजिंग द राइट वर्ड, चूजिंग द राइट वर्ड, राइट. हाय फैजान, हाय. तो दैट इज व्हाट आई थिंक अमित आल्सो वांट्स टू पॉइंट आउट कि एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा. से फॉर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल वेकेशन. अभी हम लोग वेकेशन के बारे में बात कर रहे थे, राइट. कभी कभी हम लोग उसको वेकेशन बोलते हैं, कभी कभी हम लोग उसको हॉलीडेज भी बोलते हैं. कब कौन सा बोलना है, द राइट वे ऑफ यूजिंग विच वन वेयर इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, isn't it? Isn't it? We say summer vacation. We say summer vacation, don't we? Right? But there are people who also say, I'm going for a vacation. I am going for a vacation. Right? So फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन स्पीच सिखा दो मैम. सिखा देंगे भाई, सिखा देंगे. अच्छा कि आपने बता दिया. आई विल राइट इट एंड आई विल आई विल कीप दैट इन माइंड. आई विल कीप दैट इन माइंड. सो क्या होता है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आई गो टू वॉच अ मूवी, कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि आई गो टू सी द सिनेमा. बोथ आर apparently correct. Both are apparently correct, or cinema at times is incorrect also, right? Cinema is the medium, movie is that particular one movie जो मैं देखने जा रही हूँ. मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, मैं उतना ज्यादा नहीं जा रही हूँ, लेकिन सिनेमा इज द मीडियम. Cinema is the medium, but in British English it is called cinema. In American English it is called movie. हम लोग ज्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं. Why I do not know. Maybe we have a colonial history, British colonial history. ऐसे करके हम लोगों को सही वर्ड ढूंढने में परेशानी होती है. इफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा, AFFECT and EFFECT. What is the difference? What is the difference? हमें हर टाइम, हर सिचुएशन में कौन सा राइट वर्ड है समझ में नहीं आता है. कौन सा राइट वर्ड है समझ में नहीं आता है, राइट. सो द इफेक्ट ऑफ समथिंग on me, or the effect of something on me, I do not know which one is right. And what happens, whichever I write becomes wrong. तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और एक चीज, दिस इज माय एक्सपीरियंस ओवर द इयर्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विथ हैव एंड हैज एंड हैड. Have, has and had. Do you people also have that problem? Do you people also face that problem? कहाँ पे have होगा, कहाँ पे has होगा, कहाँ पे had होगा. टेंस में नो प्रॉब्लम. अच्छा, ये बोलते हैं कि इनको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत जनों को है. जैसे हम लोग बोलते हैं माई सेल्फ सच एंड सच, माई सेल्फ पारमिता धर. नो, दैट इज रॉन्ग. I am Parmita Dhar. My name is Parmita Dhar. This is Parmita Dhar. Right? So these are the things which we have to keep in mind while we write. और बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा. और एक प्रॉब्लम होता है इन पंक्चुएशन में प्रॉब्लम होता है. कहाँ पे कॉमा होगा, कहाँ पे सेमीकोलन होगा, कहाँ पे कॉमा होगा, कहाँ पे सेमीकोलन होगा. दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा,
कहाँ पे एपोस्ट्रॉफ होगा, कहाँ पे एस एपोस्ट्रॉफ होगा, राइट? ये सारा चीज हमें बहुत अच्छे से चेक करना होता है. आजकल it has become very easy. Why? Because we have so many apps doing it. There is something called Ginger uh, software, right? And then there is the Grammarly app, which actually does make it easy for us. Make it easy for us, right? We have problem in articles and prepositions. Off, on, इस पे बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. सो वी हैव प्रॉब्लम्स इन दैट, राइट? कहाँ पे वॉज होगा और कहाँ पे वॉर होगा, दैट इज नंबर्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल. Say, for example, the two best things about the party was the food and the music. If I say the two best things about the party was the food and the music, is it a correct sentence I'm saying? Is it a correct sentence I'm saying? Just a minute. Let me share this with you, then it will be better. If you see it, you will be able to answer it. So this one, the two best thing about the party was the food and the music. So what would be the answer? I mean, is it a correct sentence I have written? I have seen somebody has already given the answer. Let me check that. अभी तो मैंने देखा था. हाँ, yes Amit, you are right. I just saw yours. Absolutely. तो correct क्या होगा? That the two best things about the party were the food and the music. Why? Because two things we are talking about. So इसको हम लोग correct कर देते हैं. Or I just share with you for everyone to see the corrected sentence. Right? दिख रहा है? Can you see it? Okay. Another thing, which is a very common mistake. I get copies, I get write-ups to be corrected and edited and whatever. Each sentence is as good as a paragraph. एक सेंटेंस 4 लाइन का, 5 लाइन का, चलते ही जा रहा है. हाँ, तो वो क्या है? इनकरेक्ट. जितना बड़ा आप सेंटेंस को करोगे, द मोर यू स्ट्रेच द सेंटेंस, राइट, द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर्स इज मोर. जितना उसको स्ट्रेच करोगे उतना गलतियां होने का पॉसिबिलिटी उसमें है. तो आपको क्या करना है? देन व्हाट यू गॉट टू डू? यू गॉट टू राइट इन सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस. You got to write in simple and short sentences in active voice. Never write in passive voice. I will eat the lunch now. It is an active voice. The lunch would be eaten by me now is a passive voice. Grammatically, both are correct, but when it comes
in writing, you should always use active voice. Yes or no? Ma'am, teaching with clear understanding. Okay, thank you. I think whatever. Uh, ठीक है, thank you अनीता सिंह. Right? So ये सारा कुछ एक्टिव वर्ब यूज करो, एक्शन वर्ड्स यूज करो. When we start doing it, it becomes easier. It becomes easier. Right? Thank you अनीता सिंह. Thank you so much. So ये सारा कुछ ध्यान में रख के हमें लिखना होगा. लेकिन एक बात मैं बताती हूँ, all that we discussed today will be of no use unless and until we take a pen and a paper like this. We take a pen and a paper and we start writing. कुछ भी. सोशल मीडिया पोस्ट लिखिए, आप लोग डायरी लिखिए, अपने बारे में लिखिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखिए, but start writing in English. Because if you do not start writing in English, all that lecture sessions that you are attending to will never be enough for you. कभी ये पूरा नहीं होगा जब तक आप लोग लिखना शुरू नहीं करेंगे. जब तक आप लिखना शुरू नहीं करेंगे. ठीक है? About writing, this is all I had for you for today. Tomorrow I will come with an interesting thing, that is the confusing words and pronunciations in English along with their meanings and uses. So we will discuss about few words which sound similar but absolutely different meaning, and how and where are those used. For example, effect and effect. Right? Facilitate and felicitate. Right? Night and night. Okay, you know, homophones, we did a session on homophones. This is one step ahead of homophones. Very very confusing words. कभी कभी हम लोगों को भी लगता है कि कौन सा यूज करें, right? And how to pronounce that. I'll do a session on pronunciation also tomorrow. Maybe 15 minutes time we will keep for pronunciation practice tomorrow, so that we come to know how are we going to learn the language properly. Right? It is important to do so. So any question if you have, you can ask me now from today's session or from anything which is there in your mind. अगर आपके दिमाग में कोई questions है, अभी मैं आपके questions लेने के लिए ready हूँ. So Anita is saying thank you very much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Anita. Kanchan Soni is saying okay, ma'am. हाँ, कोई questions अगर आपके पास हो तो आप वो मुझे जरूर बताइए. Otherwise, I am done from my end. I'll be seeing you tomorrow. Let's see what is being written. To teach is to touch a life forever. Wow, what a beautiful line you have written, Dolly. Thank you for that. अच्छा, अमित क्या लिख रहे हो आप? If I draw a picture in my mind to express my idea about it, and when I start, I can write. And when I start, I can write about it. I will stuck many times because of unable to find appropriate word due to my dictionary limitation. Yeah, but that is fine. That is fine, Amit. It's absolutely okay. It's absolutely okay. You will find a lot of synonyms in the dictionary. Use them. Use them. MS Word में आपको synonyms मिल जाएंगे, ऑनलाइन डिक्शनरीज में आपको मिल जाएंगे, और धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे उसको, you will learn about new words. Not a problem. But you have to take the first step. मतलब मुझे वर्ड्स नहीं आते हैं ये सोच के अगर मैं लिखना छोड़ ही दूं या कभी कोशिश ही ना करूं, then it is never going to happen. Then it is never going to happen. Right? So कोशिश जारी रहना चाहिए. हम लोग को भी होता है, when I write, do I get all the words? That is why dictionaries are for. नहीं तो जो डिक्शनरीज लिखते हैं, जो उसको पब्लिश करते हैं, there would have been no use for all those things. We use it. That is why people have dictionaries. I mean, publishers come up with dictionaries. Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary.
संसद का एक डिक्शनरी है जो भी बहुत अच्छा है, आप लोग यूज कर सकते हैं उसको, राइट? So that is all from my end for today. Again, I'll see you tomorrow, Wednesday, 5 p.m. sharp on the Facebook page live of SKD University. Till then, you'll start learning a little bit of English. Yes, I have, Amit. Yes, I have visited that. Why? Amit is asking if I have visited IIT Kharagpur. Yes, I have been to IIT Kharagpur. Uh, okay, so learn a little bit of new words every day, and then we can uh, proceed with our class in a more meaningful manner. Till then, take care, have fun, enjoy your evening. Bye bye.